Let us see our next question. Information is provided about two projects, Project A and Project B. Year 0 cash outflow is provided for both of them, 50,000 rupees and 70,000 rupees. Year 1 and year 2 cash inflows have been provided to us for Project A, and year 1 to year 3 cash flows have been provided to us for Project B. Discounting rate is 25%. You are required to answer that which of the above two mutually exclusive projects will be accepted under following assumptions. So from the following two, that is, say from these two projects A and B, which project would be accepted? The language of the question is clearly providing it is mutually exclusive. Under following assumptions, there are two assumptions provided to us. The first one is the projects are to be accepted only for once. The second is the projects are of repetitive in nature. Second question, if nothing is specifically mentioned in the question about type of the project, which assumption is to be followed? That is a question. Year 1 to year 3, discounting factors information have been provided to us. Everybody is requested to go through the question, please. Now friends, over here, for the purpose of decision making, let us have an understanding that say how we will compute the answer. See, first of all, we understand that the future cash flows will be discounted in present value term, and with that NPV will be found. First and second year discounting factor is 1.44 and 1, 2, 3 discounting factor summation is 1.952. So we can understand apparently that as far as the project A is concerned, it is 37,000 rupees into 1.44, so 53,280 minus 50,000, so NPV for project A is 3280. 1.952, that is year 1 to year 3 factor summation, into 37,600, that is 73,395.2 minus investment 70,000, so NPV is going to be 3395.20. Not something which is great to be done. Now the important point over here is like this. If at all the question is providing the information that the projects are to be accepted only for once, means the project is not going to be repeated later on, then in that case, listen me carefully, we are going to accept the project which has higher positive NPV, that is the project B in this example. Yes, we have to accept the project which has higher positive NPV. We understand that over here, listen me carefully, if at all the projects are to be accepted for once only, then what is the number of years over which the NPV is generated becomes irrelevant. Why? Because you are going to accept the project only for once. So future cash flows are discounted in present value term. From that, investment is deducted and you find NPV. If it is positive, then accept the project. If it is negative, then in that case you reject the project. And between mutually exclusive, the project which is having higher positive NPV will be selected irrespective of the time period over which this NPV is generated. Why? Because we understand that say once the project is over, it is not going to be repeated once again, say in future. Further, of course, NPV is of year 0 value. So in present value term, you are making a comparison and you take the decision. And if at all the projects are of repetitive in nature, what does it mean? It means that say once the project is over at the end of the second year, again it will be accepted for the next 2 years. Once it is over at the end of the fourth year, again it will be accepted for the next 2 years, and so on. What I want to tell you is that if at all the projects are of repetitive in nature, then in that case we are required to take the decision not with the NPV but with the equalized annual NPV.
This NPV is generated over the time period of 2 years. This NPV is generated over the time period of 3 years. So what is the equalized annual NPV? That calculation will be made, and we will select a proposal which is having higher equalized annual NPV. This is the way, so we are required to make the calculation of answer. So please write down answer. Decision making for mutually exclusive investment proposal, comma, with unequal lives. In that, write down first point. Over here, first of all, we will compute NPV for each project. Full stop. Project having negative NPV will be rejected. Full stop. Second point, if projects are of one-time acceptance, comma, in that case, we should select a project having higher positive NPV. Full stop. We do not have to consider time period over which this NPV is generated. Full stop. Third point, in case of one-time acceptance, life of project is irrelevant, and only in present value term, comma, we will make a comparison. Full stop. Fourth point, if projects are of repetitive in nature, comma, then
we have to compute EA and PV. Equalize the annual NPV for decision making. Full stop. Formula write down NPV upon PVIFA at K cost of capital for n number of years. Fifth point, in case of a repetitive project, comma, once project is completed, comma, it will be again accepted for same time period, and it will go like this forever. Full stop. This kind of assumption is made for decision making. With paragraph write down, if nothing is specified, comma, we make an assumption that projects are of repetitive in nature and put a note for the same. Full stop. In that case, we will use equalized annual concept for decision making. Full stop. तो फ्रेंड्स, मैंने आपको साथ साथ में जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर लिखवा दिया है यहाँ पे नोट में, कि अगर क्वेश्चन में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है रिगार्डिंग द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, देन इन दैट केस वी आर रिक्वायर्ड टू use the equalized annual criteria for the purpose of decision making, assuming that say we are required to make an assumption the projects are of repetitive in nature. ना दूसरा मैं एक चीज आपको बताता हूं, सेम क्वेश्चन है और हमको ऐसा पूछ रखा है that which project should be selected based on NPV criteria. तो क्या करो, सिंपल एनपीवी कैलकुलेट करो एंड यू गिव डिसीजन. वो रिपीटेटिव है या नहीं है वो अपने को नहीं देखने का है. क्वेश्चन में दे रखा है दैट से यूज पेबैक पीरियड क्राइटेरिया टू टेक द डिसीजन. तो जिसका पेबैक पीरियड कम है उसको सेलेक्ट करो.
खत्म हो गया। यू डोंट हैव टू अप्लाई योर माइंड कि ये रिपीटेटिव है या नहीं है। आपको वो तभी ही सोचना है कि जब हमको सिर्फ क्वेश्चन पूछा है और मेथड हमको अपने आप सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या कंपनी को करना चाहिए ये सिचुएशन में। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, से वी हैव टू सिलेक्ट द मेथड फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जैसे कि कैपिटल राशनिंग का क्वेश्चन है एंड द प्रोजेक्ट्स आर ऑफ द डिविजिबल इन नेचर, और हमको ये पूछा है कि कंपनी को क्या करना चाहिए, तो हमको ऐसा समझना है दैट से वी हैव टू अप्लाई द पीआई क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग। पर अगर हमको कोई स्पेसिफिक मेथड दे रखा है ना, देन इन दैट केस यू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन दैट मेथड और खत्म हो गया। ठीक है, so write down with paragraph, if at all we have been given any specific method to be followed for decision making, comma, then we need to follow it, and with that decision will be taken. Full stop. Now we are writing answer. Write down answer. Working note number 1, calculation of NPV for project A. कैसे होगा उसमें, ईयर 1 एंड ईयर 2 कैश फ्लो है 37,000, उसको डिस्काउंट करेंगे 25%। फर्स्ट ईयर का फैक्टर है 80 पैसे, सेकेंड ईयर का फैक्टर है 64 पैसे। सो दिस इज 1.44 उसका प्रेजेंट वैल्यू। सो 53,280 उसके सामने हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपए, और फिर हमारा एनपीवी आ जाएगा दैट इज 3280। दिस इज द फर्स्ट वर्किंग नोट फॉर एनपीवी ऑफ ए। वैसा का वैसा हम लोग बी का करेंगे, फिर दोनों का इक्वलाइज एनुअल एनपीवी और फाइनल डिसीजन। नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 2, calculation of NPV for project B। उसमें ईयर 1 to ईयर 3, अगेन कैश फ्लोज 37,600, डिस्काउंटिंग एट 25%, PVIFA at 25% for 3 years, 80 पैसे, 64 पैसे, 51.20 पैसे। $1.952 उसके ऊपर से प्रेजेंट वैल्यू 37,600 इंटू 1.952 73,395.2। $73,395.2। Investment, it is 70,000। NPV 3395.20। ऐसा करके एनपीवी किया जाएगा बी प्रोजेक्ट का।
Next, working note number 3, calculation of EANPV. EANPV का मतलब है इक्वलाइज एनुअल एनपीवी. कैलकुलेशन कैसे होगा? एनपीवी अपॉन पीवीआईएफए at k cost of capital for n number of years. NPV for project, sorry, ENPV for A and B. As far as A project is concerned, उसका NPV है 3280 divided by PVIFA at 25% for 2 years. B project का है 3395.20 divided by PVIFA at 25% for 3 years. So this is 3280 divided by PVIFA 25% for 2 years. So it is 0.8 plus 0.64, that comes to 1.44. So it is 2277.78. For the second one it is 3395.2 divided by 3 साल का annuity factor 1.9520, 1739.34. This is the way we'll have the equalized annual NPV. तो क्या होगा? प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, एनपीवी एंड इक्वलाइज्ड एनुअल एनपीवी 2277.78, 1739.34. यहाँ पे 3280 and 3395. That is the way we'll have the NPV and equalized annual NPV comparison. तो if at all the project is of one time acceptance तो project B लेना चाहिए, and if it is of the repetitive in nature तो A लेना चाहिए. So final answer will be like this. Company is advised to select project B, comma, if project is of one time acceptance. Full stop. The company should accept project A if it is of repetitive in nature. Full stop. फ्रेंड्स, जब प्रोजेक्ट रिपीटेटिव इन नेचर है तो एक दूसरा मेथड भी होता है, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, और उसमें क्या किया जा सकता है, 2 और 3 उसका हम लोग एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं. लाइक उसका एलसीएम क्या आएगा? 6. तो हम लोग प्रोजेक्ट ए को अगर हम लोग 6 साल के लिए लेते हैं, प्रोजेक्ट बी को वापस हम लोग 6 साल के लिए लेते हैं, ऐसा करके हम लोग दोनों के कैश फ्लोज का कंपैरिजन कर सकते हैं इन अ वे दैट्स एनपीवी का. जैसे कि प्रोजेक्ट ए को हमने 6 साल के लिए लिया तो कैसे होगा फ्रेंड्स? ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ईयर 0 में कितना? 50,000 का आउटफ्लो है, ठीक है.
ईयर 1 में 37 इनफ्लो, ईयर 2 में 37 इनफ्लो, ईयर 3 में 37 का इनफ्लो और 50 का आउटफ्लो, तो 13 का आउटफ्लो, फिर वापस 37 37 37। बाद में प्रोजेक्ट ए लिया जाएगा, पर उसका अभी हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते हैं, क्योंकि हमको एक पॉइंट ऑफ टाइम कि जब दोनों प्रोजेक्ट पूरा का पूरा खत्म हो जाता है तब तक का कैश फ्लोस कैलकुलेट करना है। दिस इज फॉर ए। वैसा का वैसा बी के लिए किया जाएगा। 70,000 का आउटफ्लो, देन 37,600 का इनफ्लो फर्स्ट ईयर में, 37,600 इनफ्लो फॉर सेकेंड ईयर में, 37.6 माइनस 70, तो इन्वेस्टमेंट कितना होगा 32.4। कब? थर्ड ईयर के एंड में। दिस इज 37.6, 37.6 एंड 37.6। यहाँ पे मेरा गलती हो गया, प्रोजेक्ट ए का लाइफ 2 साल ही है, सो यहाँ पे 13 का आउटफ्लो होगा सेकेंड ईयर के एंड में। क्यों? क्योंकि 37 का इनफ्लो और 50,000 का आउटफ्लो, फिर वापस 37 का इनफ्लो, 13 का आउटफ्लो, फिर 37 का इनफ्लो और लास्ट में 37 का इनफ्लो। यानी 2 साल वापस प्रोजेक्ट लिया, 4 साल वापस प्रोजेक्ट लिया, 6 साल पे खत्म कर देते हैं। ये दोनों का आप एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनपीवी कैलकुलेट करोगे, देन इन दैट केस जो ऑप्शन का इक्वलाइज एनुअल एनपीवी ज्यादा है उसी का ही एब्सोल्यूट एनपीवी ज्यादा आएगा। एंड फ्रेंड्स, वो जो एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ द एनपीवी होगा ना, उसको आप एन्युइटी फैक्टर से डिवाइड करो, 6 साल के एन्युइटी के फैक्टर से, क्योंकि वो 6 साल में एनपीवी है, तो वो इक्वलाइज एनुअल एनपीवी एग्जैक्टली यही वैल्यू आ जाएगा। दिस इज द वे वी कैन क्रॉस वेरीफाई कि हमारा डिसीजन सही है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर वैसे मैंने आपको लिखवा दिया है। इफ नथिंग इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड, which assumption to be followed? Try to answer the second question. If nothing is specified, comma, generally we make an assumption that project is of repetitive in nature and equalize the annual concept. Would be followed. Full stop. Please write down answer. तो एक छोटा सा समरी पूरे क्वेश्चन का। सबसे पहले हमने एनपीवी कैलकुलेट किया, इक्वलाइज एनुअल एनपीवी कैलकुलेट किया, क्योंकि दोनों का लाइफ अलग अलग था। फिर हमने क्या बोला कि अगर प्रोजेक्ट्स आर टू बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर वंस, तो बी प्रोजेक्ट लीजिए जिसका एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनपीवी ज्यादा है, एंड इफ एट ऑल द प्रोजेक्ट्स आर टू बी एक्सेप्टेड रिपीटेटिव इन नेचर, तो प्रोजेक्ट ए लीजिए, क्यों? क्योंकि उसका इक्वलाइज एनुअल एनपीवी ज्यादा है। अगेन ओवर हियर आप लोग ऐसा समझ सकते हैं विद द वर्किंग दैट्स वी डिड अर्लियर, कि जैसे कि प्रोजेक्ट ए में रिकरिंग कैश फ्लो है 37,000 रुपीज का, माइनस इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000 रुपए, डिवाइडेड बाय 2 साल का फैक्टर समेशन इज 1.44, सो 50,000 डिवाइड बाय 1.44, 34,722, उसको आप 37,000 से डिडक्ट करो तो you'll get the same answer। दूसरे प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली सेम चीज होगा, 37,600 माइनस इन्वेस्टमेंट कितना है 70,000 रुपीज का, डिवाइडेड बाय 3 साल का एन्युइटी फैक्टर समेशन 1.9520, सो 35,816, उसको हम लोग 37,600 से डिडक्ट करेंगे, आपका सेम आंसर आ जाएगा।
तो ऐसा शॉर्टकट भी पॉसिबल है अगर आप लोग कुछ ऐसा करना चाहते हो तो।